हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल. Today we'll be talking about Khasada waterfall. It is a very small waterfall, but the good thing is always continuously water flows from the forest, and it's a good bathing place and crystal water है. It is surrounded by green scenery and hills, which is really amazing. And the natural stream, and the dense forest makes it looks really beautiful. So this is the reason this natural beauty attracts thousands of visitors throughout the year, and it is best for picnic and excursion during the weekends. Also, I'll be giving you some tips and tricks and techniques to drive safe at night, or what will make it easy for you to drive at night. So दोस्तों, while going to Khasada waterfall, there are 2-3 places on the way which we could you guys also could cover. हमने भी cover किया था. एक है monastery जो on the way ही पड़ेगा आपको. It is one of the beautiful monasteries that I have visited so far. And और 2-3 hot spots हैं जो जैसे कि आपका तप्तपानी hot spring है. That is also very famous and very good to visit. और on the way एक deer park भी है. That also you guys can visit, which is very good. You have a lot of space to sit. You can park your vehicle. और जब ट्रैवल आप करते हैं रूट बहुत अच्छा रहता है. जगह जगह में आपको ब्रेकफास्ट अच्छे मिल जाते हैं. लंच करने के लिए बड़े बड़े टिफिन स्टॉल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स नहीं है, बट विच इज़ गुड. आई मीन द वंस यू विल फाइंड आर गुड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फूड ऑन द वे. सो हमने भी खसड़ा वाटरफॉल जाते टाइम ऑन द वे जो जगह था, वी सॉ दैट एंड देन वी फाइनली रीच टू द खसड़ा. And this is the deer park on the way पड़ रहा था, तो so we went to deer park and almost spent 2-3 hours time here. It was very good, nice outing during the day time. weather भी अच्छा था तो घूमने में मज़ा आया काफ़ी. तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद then we kind of spent 2-3 hours then move towards hot spring. वहाँ पे एक छोटा सा waterfall भी है. We spent some time there, दर्शन किया हमने देवी माता का. And from there we started our journey towards ahead towards Jirango. On the way we had our lunch, nice meals we had. It was a very affordable meal, and after having our meals then we went towards Jirang. Scenic route है काफ़ी, बहुत ट्रैफिक बहुत कम रहेगा, and you can have a very nice drive on the way. And almost 30-40 kilometers का ऐसा रूट रहता है जहाँ पे दोनों तरफ माउंटेन्स रहेंगे, and it will be kind of a jungle route you have to travel, which is very good, very scenic. Jirango में पहुँचने के बाद we had we spent some time at the there are 2 places basically in Jirang we can visit. One is Shanti Stupa, and Shanti Stupa में भी आप 1 hour तक spend कर सकते हैं. There are a lot of things to see. आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं वहाँ पे. You can wear the traditional dresses of Tibetans and spend some time at there. And then after spending some time, you can buy some souvenirs also from outside. Then you can move towards Jirango Monastery, जो कि वहाँ से around 2-3 kilometers दूर में रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं है. If you have your own vehicle, you can visit this, and then you can visit towards the Jirango Monastery. And talking about monastery again, it is one of the biggest monastery of Odisha, and it was inaugurated by Dalai Lama in 2010. And काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है. एंड अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक चीज़, you can spend some time with them. You can see how monks live their life. And there is a restaurant also inside. आप वहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं. इनकी टाइमिंग्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आप विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तिब्बतन फूड भी यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट वी हैड स्पेंट 2-3 hours टाइम. हमने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी, तिब्बतन स्नैक्स वगैरह भी हमने ट्राई किया. एंड देन यहाँ से फिर टाइम स्पेंड करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, मतलब स्नैक्स वगैरह खाने के बाद, देन वी मूव्ड towards the Khasada waterfall. Khasada waterfall is just 30 kilometers away from here. So हमने रास्ते में थोड़ा बहुत और meals वगैरह, people didn't have food, so on the way they had their meals as well. रास्ते में ही there are not many options once you reach towards Jirango, because it is little inside the forest. थोड़ा villages वगैरह कम हो जाते हैं धीरे धीरे इस तरफ. So और अब जब खसड़ा पहुंचेंगे वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ. So you have to carry your own food if you are traveling towards this place. And so यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है टूवर्ड्स खसड़ा. रूट जो है काफ़ी सीनिक है, बहुत ही you will have nice roads. सिंगल रोड रहेगा. तो दोस्तों अभी हम खसड़ा जलप्रपात जो वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है, उसकी तरफ जा रहे हैं. यहाँ से अराउंड अभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है.
तो अभी हम जो मोनेस्ट्री आए थे उससे नज़दीक है, 6-7 किलोमीटर। आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा व्यू है टुवर्ड्स दी वाटरफॉल। नैरो रोड है बट इट्स ऑल राइट, यू कैन ड्राइव योर व्हीकल। और फैमिली के साथ जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा उठा रहे हैं रास्ते का। तो पहुंचते हैं, वाटरफॉल पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सो टिल देन आप भी रास्ते का मज़ा लीजिए। So दोस्तों, as we are driving, Khasada waterfall from Jirango monastery is not that far. It is around only 7 kilometers. तो जिरांगो के पास एक दो waterfalls हैं which are quite famous. I mean not that big, but good enough. I mean you can spend time there. एक है झिरझिरा waterfall भी, वो भी around 10 kilometers है from monastery. तो आप अगर monastery देख आज आते हैं तो you can visit these two waterfalls which are nearby. As we are discussing, हम पहुंच गए हैं नज़दीक. So जगह जगह ये बोर्ड्स वगैरह, साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं. तो इट इज़ गुड फॉर द पीपल हु आर कमिंग न्यू और न्यू टू द प्लेस. तो वहाँ पे पार्किंग की जगह पे एंट्री पॉइंट पे 50 रुपीज़ लेते हैं चार्ज. फेयर इनफ, उनके अर्निंग के लिए भी इट इज़ नेसेसरी. सो हम पहुँच गए हैं अभी. इन अदर 5 to 10 minutes विल बी रीचिंग. So like I was saying, I will provide you the links, Google Maps for both the waterfalls which are near to the Jirango monastery. As we are reaching, sunset हो रहा है, beautiful scenic व्यू है, आप देख सकते हैं. जैसा मैं बोल रहा था, दिस ब्यूटीफुल खसड़ा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन गजपति डिस्ट्रिक्ट एंड 11 किलोमीटर फ्रॉम चंद्रगिरी टाउन एंड 90 किलोमीटर फ्रॉम पारलाखेमुंडी. दीज आर नियर बाय टाउन्स फ्रॉम हियर. एंड दिस वाटरफॉल इज गुड टू स्पेंड अ डे. अगर आप आउटिंग के लिए आते हैं एंड एक्सकर्शन या पिकनिक के लिए आते हैं तो. एज इट इज गेटिंग फेमस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट more accessible. roads वगैरह built हो रहे हैं. They're trying to develop the entire area as well. And as we are talking, let me talk about opening timings वगैरह इसकी क्या हैं. It is it is open from 6 AM to 6 PM in the evening. And best time visit करने के लिए अक्टूबर to जून, winter season preferably are good. Rainy season में rains a lot. And अगर यहाँ पे आप आते हैं तो नियरेस्ट बस स्टॉप है मोहना. आप बरहमपुर से भी आ सकते हैं. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसका बरहमपुर है, तो वहाँ से आके आप कैब करके, नहीं तो बस से यू कैन कम डाउन. एंड द एयरपोर्ट अगेन इज़ भुवनेश्वर. एंड भुवनेश्वर से ये आपको डिस्टेंस पड़ेगा 260 किलोमीटर अराउंड. और रूट जो रहेगा आपका बरहमपुर होते हुए आपको आना पड़ेगा ये जगह. और बरहमपुर से आपको ये डिस्टेंस रहेगा अराउंड 90 to 95 किलोमीटर. तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं खसड़ा वाटरफॉल में. छोटा सा वाटरफॉल है नियर टू द मोनेस्ट्री. और वाटर फ्लो ठीक ठाक है, अच्छा खासा है. मैंने अभी यहाँ पे सोचा था मैं आई टेक अ बाथ. और जगह काफ़ी अच्छा है. मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा टर्न करके. आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ. और यहाँ पर आने के लिए 50 रुपीज़ का टिकट लेते हैं. और आप यहाँ पे आके नहा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा जगह है, पीसफुल. इवनिंग मॉर्निंग टाइम में आप आ सकते हैं. बहुत पीसफुल एरिया है. अभी इवनिंग होने को आ रहा है तो विल गो बैक, बट द प्लेस इज़ रियली नाइस. तो यहाँ पे हमने करीबन 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया था बैठे. एंड नाउ इट्स गेटिंग डार्क, सो विल बी हेडिंग बैक टुवर्ड्स आवर व्हीकल. देन विल गो बैक होम नाउ. इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन द लैप ऑफ नेचर. एंड सिंपली वी ट्रैवल्ड हियर more than 2 times. And I would suggest the best time is November to February in winter season. And we had traveled in September sometime. And at that time we had to cross the river on a plank of wood to go to the other side. And during March it will be too hot. So March to onwards till the rainy season comes, it will be hot. So you can travel somewhere in between winter season. The rainy season there is a lot of water and it becomes very risky. And on the rock there are a lot of slimes which makes it very slippery, so you have to be very careful. And Google Maps I will provide you can use that, which takes you to the exact location. And this waterfall falls in Gajapati district, which itself is famous to have lot of tourist spot, starting with Mahendragiri, which is the highest peak of Odisha. Gandahati waterfall which is pretty famous. And it also has Mankodadiya waterfall, that is also quite famous. And including the monastery as well, which is in Chandragiri town. The name in Khasada means slippery. So as this because of the slimes on the rock, it has become very slippery. So that is why the name came as Khasada waterfall. दोस्तों, closing the video now. We have finally concluded our journey to Khasada dam. यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, नहाया. और now we are
heading back home. So आज के जर्नी में हमारा तप्तपानी और डियर पार्क, then we stopped by for lunch and then the monastery and the dam, I mean the waterfall. So nice day. So closing the day with this view. का time है, you can see the moon and below the mountain, and look at the view. So we had a quite a fruitful day, and now it's getting darker and we have to head back home. रात का time में, especially in the jungle area, though the road looks more beautiful at night compared to the day, but we have to drive with a lot of caution during the night. So आज के topic में towards as we are heading back, I'll be sharing some of my experiences and tips on how to drive during the night time. So driving in the night is a lot dicier after the sun sets. It's completely a different ball game altogether when it comes to driving. Field division is less, and even people who can see well also have problem driving. There are certain dips and rises that can't be perceived. कभी डाउन होता है तो पता नहीं चलता है. स्पेशली सनसेट के बाद our vision becomes very restricted or limited to low contrast color contrast, and further restricted because of the glare जो हेडलाइट से आता है from the oncoming vehicle, सामने से जो आते हैं. So इसके लिए थंब रूल यही है कि आप डायरेक्ट हेडलाइट जो लाइट पड़ रही है उसको ना देखें. वी लुक एट द रोड और उसमें आपको पता चल जाएगा जो द व्हीकल विच इज़ कमिंग प्रेफरेबली टुवर्ड्स योर राइट साइड में जो आता है. तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. आप अगर देखेंगे अभी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये व्हीकल जो आ रहा है सामने से, इट केम वेरी क्लोज टू अस बिकॉज इट इज़ अ सिंगल रोड. So you need to follow this rule and drive on the left side of the road always. If you are driving on a single road, always check your lights. You need to have a light working properly, and clean your windows and wind screens always to have a clear vision, especially at the night. Do not overspeed, especially रात के टाइम पे, कि हमारा लाइट जहाँ तक रीच करता है उससे आगे हमको इतना क्लियरली पता नहीं चलता. स्पेशली pedestrians हैं और any animals are moving, or somebody going by cycle, you will not be able to know if your vehicle is very running very fast. And you have to understand the use of where to use high beams and dippers and low beams. Especially you can blind the other person and it can lead to a crash. And you have to learn how to flash the dippers as well. और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्री साइड में when you are driving और हाईवेज में, there are a lot of drivers who drink and drive, so from their movement only you can assess. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बहुत टायर्ड हैं, never drive at night because there are chances you might fall asleep because of the cold environment, and night time generally you feel dizzy. And also, if it is possible, use anti-glare IRVM. Nowadays most of the cars come with auto dimming IRVM. So always, like I was saying, always drive slow and drive defensive. Drive slow कहने का मतलब यही है because of the low visibility and reaction time बहुत कम हो जाता है. And for example, your headlight का रेंज आपका देखिए हमेशा constant रहता है, बट आपका स्पीड के हिसाब से आपका डिस्टेंस पे स्टॉप करना इंक्रीज हो जाता है. As we are nearing home, so I'll like to conclude the day. So do let us know how you like the video. So thanks, take care, bye bye, and do subscribe.